मिसक्लेनियस एक्सरसाइज क्लास 12th मैथमेटिक्स। बच्चों इसमें हमने अभी तक कवर किया है 3 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। लेट a इक्वल टू 1 minus 1 1 minus 2 3 1 and 1 1 5. Verify that part first adjoint A inverse equal to adjoint of A inverse, and second is A inverse inverse is equal to A. ओके बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो शेयर करें। साथ ही बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप पढ़ रहे क्लास 12th की मैथमेटिक्स डिटरमिनेंट सीरीज। ना बच्चों सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। गिवन a इक्वल टू 1 minus 1 1 minus 2 3 and 1 1 1 and 5. For a inverse we calculate determinant a. So according to along R1 1 into 15 minus 1 into 1 minus minus plus 1 minus 10 minus 1 plus 1 बच्चों minus 2 and minus 3. So 14 minus 11 minus 5. That's why minus 2. That's why बच्चों determinant is does not equal to 0. So just a moment बच्चों, 1 minus 2 sorry minus 2 and 1 minus 2 3 1 1 1 5. So ये minus 2 and 2 22. So बच्चों is minus 13. So A inverse is exist. Now बच्चों we calculate cofactor. आप इसके लिए कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे 15 1 minus 14. जब आप इसके लिए कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे minus 10 minus 1 11 और then sign will be changed. Now for this minus 2 minus 5 is minus 5 and C21 equal to minus 10 minus 1 is minus 11. So बच्चों sign will be changed. So 11. For this element 1 into 5 5 minus 1 is 4. For C23 3 minus minus plus 4, that's why बच्चों is 7. 3 minus minus plus 4, 3 minus 4 is minus 1. For this element बच्चों 1 into 1 minus minus 2 minus 1 plus 2 is 3. Then odd, that's why sign will be changed is minus 3. Now for C31 for this element minus 2 and minus 3 is minus 5. Even though then no change is minus 5. Now बच्चों C32 equal to 1 into 1 minus minus plus 2 is 3. Or then sign will be changed. Now C33 equal to
3 minus minus plus 4, so 3 minus 4 is minus 1. So now बच्चों adjoint A equal to, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 14 11 एंड -5 11 4 एंड -3 -5 एंड -3 एंड -1. So now बच्चों A inverse is 1 by -13 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 and -1. Now बच्चों your LHS is adjoint A का आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है. Let's adjoint is B. Let adjoint A equal to B. Then we will find B inverse. So B is your matrix 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1. So now we first calculate determinant of B. So बच्चों -4 minus minus plus 9 is 5. So 14 into 5 -4 minus 9 is बच्चों -13 minus 11 11 1 जा -11 and -15 is -26 plus minus minus 5 -33 plus 20 is 13. That's why बच्चों 14 and -13 is -182 minus minus plus 286 minus minus plus 65. So बच्चों finally your value is 169. That is not equal to 0. So B inverse is exist. So we find cofactor of B. So C11 equal to -4 minus 19 is -13. C12 equal to -26 odd, that's why 26, and C13 equal to -13. For C21 -11 and -15 is -26 or that's why sign will be changed. Now for C22 -14 and -25, so बच्चों -39 एंड फॉर C23 ये कॉलम ये रो नहीं लेंगे. 14 3 जा -42 माइनस माइनस प्लस 55,
So बच्चों is 13 and odd is so minus 13. Now for C31 minus 33 minus minus plus 20, so minus 13. Now बच्चों for this element minus 42 minus minus plus 55. So 55 minus 42 is 13, but here odd, so minus 13. And for C33 56 minus 121, so minus 65. So now बच्चों adjoint A equal to, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -13 26 -13, सॉरी बच्चों बी एडजॉइंट बी। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 26 -39 -13 एंड -13 -13 -65। सो नाउ बच्चों बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट बी यानी 169 -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। now बच्चों -13 is common, then -1 by 13 1 2 1 and बच्चों -2 3 and 1 1 1 and 5। now बच्चों we calculate adjoint A in adjoint of A inverse, then your A inverse is this. So now let C equal to adjoint of A inverse. So बच्चों your A inverse is this. So their adjoint is so बच्चों your C is -1 by 13 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 and -1। So बच्चों we first calculate cofactors। Determinant of this 169, so 169 upon -13, so determinant of C is -13 .
नाउ बच्चों को फैक्टर ऑफ दिस इज -13, एंड जब आप -13 से डिवाइड करेंगे तो 1, C12 इक्वल टू -2 एंड C13 इक्वल टू 1. For C21 equal to 13 2 जा 26, C22 equal to 3 and C33 equal to 1. And for C31 equal to 1, 1 and 5. बच्चों आप देख सकते हैं ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये सेम है, तो आपकी कोफैक्टर सेम होगी, बस बट आपको ये -13 से डिवाइड करना होगा इस कंप्लीट को, तो आपने डिवाइड कर लिया. दैट्स व्हाई एडजॉइंट C इक्वल टू बच्चों 1 बाय just moment we let adjoint A inverse is C, so बच्चों A inverse is C, then adjoint C. This is your A inverse, so it is C. So now बच्चों adjoint C is 1 by determinant C बच्चों रो को आप कॉलम में लिखेंगे, so 1 by -13, 1 -2 1, -2 3 and 1 and 1 1 5. So now बच्चों we see that adjoint A inverse equal to adjoint of A inverse. Hence proved. Now बच्चों part second is to solve A inverse of inverse equal to A. So बच्चों in this first section we calculate A inverse. So let B equal to A inverse. So 1 by -13, 14 11 -5, 11 4 -3, -5 -3 and -1.
So now बच्चों we find it B inverse. So for B inverse is 1 by determinant B adjoint of B. बच्चों we also find B inverse determinant B is minus 1 by 13 14 into minus 4 minus minus plus, so minus 9 minus 13, that's why बच्चों minus 182 plus 11 into, so 286 plus 65, that's why बच्चों 169 upon minus 13, so minus 13. Now cofactor of B is C11 equal to, बच्चों आपने कैलकुलेट किया था फॉर बी 13, आप 13 से डिवाइड करेंगे, सो जब आप माइनस 13 से डिवाइड करेंगे तो इट्स 1, C12 इज -2 एंड C13 इज 1. Similarly C21 equal to -2 and C22 equal to 3 and C23 equal to 1. Now to 115. So B inverse is just a moment बच्चों, A inverse is -1 by 13, okay, 14, 11 minus 5, 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 and minus 1, that is right. You assume B, so B inverse is 1 by determinant B adjoint B. Value of this is 169, so 169 after divided by the minus 13 is minus 13. ओके तो बच्चों जब आप यहां जब इसके आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे
तो आपकी जो डिटर्मिनेंट आएगी ये आएगी -13 का क्यूब, सो 1/-13, सो 1/-13, एंड आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 -2 एंड 1, -2 3 एंड 1, 1 1 5 into -1/13, both are cancel out, that's why बच्चों 1 -2 and 1, -2 3 and 1, 1 1 5 equal to A, hence proved. So बच्चों A inverse of inverse equal to A, hence proved. ओके बच्चों, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप पढ़ रहे हैं मिस्सेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिटरमिनेंट। बच्चों इसमें हमने फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट डाटा यूज की है, फर्स्ट डाटा यूज करके हमने सॉल्व किया है। ओके बच्चों, सो बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।